Hello, my dear student. Hope you are fine. I too. Now, in the topic sexual reproduction in angiosperms, we have already studied the types of pollination, self-pollination and cross-pollination. And not only that, in the last two lectures, we have also seen the merits and demerits of both of them, self-pollination and then cross-pollination. Now remember, self-pollination or autogamy causes inbreeding. Okay, inbreeding यानी that male and female gametes are from same plant. Okay, from same mother plant. That is called as what? That is called as inbreeding. ये inbreeding होता है. मेल एंड फीमेल गैमेट्स बोल रहा हूं मैं, दोनों भी गैमेट्स एक ही प्लांट के आ गए. That is called as inbreeding. So autogamy can result in this because pollen grain from anther will fall on the stigma of the same flower. कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोलते हैं वो, थोड़ा लेजीनेस दिखाते हैं. But we know that inbreeding is not liked by the nature, and that inbreeding depression occurs. Okay, and that weak progeny will be produced because of that. What it produces? Weak progeny. Progeny यानी new generation. So the new generation produced will not be very much healthier there. और ऐसा करते करते और वो भी सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, इनब्रीडिंग कर रहे हैं. अगेन सेम वीक प्रोजेनी फिनिश, isn't it? So that species may get lost because of that. That fear is there. And that's why cross pollination which causes outbreeding, ये क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो क्या करता है? आउटब्रीडिंग उसे कहते हैं. Why it is called as outbreeding? Because that pollen grain from the anther of one flower present on one plant goes to the stigma of other flower present on other plant. तो ये प्लांट अलग अलग है, टाइप एक ही है, टू डिफरेंट प्लांट्स है ये, प्लांट नंबर ए, प्लांट नंबर बी. And that's why this is known as outbreeding. This is known as cross pollination. So obviously ये अगर प्लांट ए है, ये प्लांट बी है of the same type, सेम टाइप का मतलब वही टाइप जो है और वही स्पीसीज के भी हो सकते हैं. Okay, this is sunflower, this is also sunflower, this is mango, this is also mango. Okay, then in that case, since the plants are different, their genetic combination or genotype will be different. The genes of this plant and genes of this plant will be different. So new genetic combination will be produced, and that is liked by the nature because that causes some variations in the characters. New variations will be there, and that can take part in organic evolution. तो चलो ये बात ध्यान में आ गई. Outbreeding is preferred by the nature rather than inbreeding. और इसके लिए लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था ह्यूमन बीइंग गॉट दिस पॉइंट वेरी अर्लियर, एंड दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग हैज क्रिएटेड दैट मॉरल रिलेशंस देयर, लाइक दैट फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन, ब्रदर एंड सिस्टर इन दैट फैमिली. ओके, तो ये जो फैमिली लाइफ है यानी इसका मतलब क्या है? इनब्रीडिंग, इवन दो मेल एंड फीमेल आर देयर, the inbreeding will not be possible there. That is not allowed there socially, ethically. Okay, biologically उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. I would like to clear, biologically no problem is there because one is male, one is female. But practically weak progeny will get produced, and that's why it is not considered valid in our society. And that is really great. तो जिस इंसान ने ये सिस्टम बना दिया, that particularly grateful to that. Okay,
नाउ अब प्लांट्स में नेचुरली क्या होता है, देखो, टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन some definite devices are produced there by the plants. एक 3-4 devices ऐसे interesting है that cross pollination will be only possible, self pollination will be avoided. या ऐसे डिवाइसेस या ऐसे कैरेक्टर्स बन जाएंगे इस प्लांट में जिससे उनको सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी पॉसिबल ही नहीं होगा. And the only alternative will be there, outbreeding or cross pollination. तो वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स क्या क्या है उसे कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और contrivances for cross pollination. One by one we shall learn. One is the unisexuality. एक पहली कंडीशन है unisexuality. Then the second condition is there, that is dichogamy. Okay. Bico नहीं. Then number 3 is there self sterility. Isn't it? Very interesting condition. And then number 4 is there heterostyly. So one by one we shall learn all the 4. One by one. Unisexuality condition means what? Means here plants produce only unisexual flowers, all unisexual flowers. अब unisexual flowers का मतलब हम भी unisexual है, human beings are unisexual. हम unisexual का मतलब क्या है? That means males are different, females are different. Individuals में लिए है तो men, women या boys and girls they are different, we know morphologically. And particularly inside the body also. Okay. So here male flowers and female flowers are different. Okay. Male flowers will contain only the androecium. Female flowers will contain only the gynoecium. ध्यान में आ गया? Male flower जो है that will contain only the androecium. इसमें gynoecium नहीं होगा, उसमें क्या होगा? Only the androecium. And female flower will have only the gynoecium. ये male flower है, यहाँ पे खाली मैं एंथर दिखाऊंगा आपको like this. Okay. And ये female flower है. And this will be having gynoecium with the receptive stigma. Okay, यानी मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट है. मेल फ्लावर विल नॉट हैव द गायनोशियम, फीमेल फ्लावर विल नॉट हैव द एंड्रोशियम. ओके, तो ये अलग अलग होने की वजह से ऑटोगैमी पॉसिबल है क्या? सो पर्टिकुलरली आई विल से दैट ऑटोगैमी नॉट पॉसिबल. कभी भी पॉसिबल नहीं. ऑटोगैमी यानी इन द सेम फ्लावर, transfer of pollen grain from anther onto the same flower, stigma of same flower, that is called as the autogamy within the same. तो ऑटोगैमी तो पॉसिबल ही नहीं है, रूल्ड आउट. हाँ, पर इसमें अभी 2 कंडीशंस में मैं आपको बताऊंगा. वन इज कॉल्ड एज डायोशियस प्लांट, डायोसी कहते हैं उसे, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज dioecious plant, and other is called as monoecious plant. देखो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना पड़ेगा. मोनोइशियस प्लांट और डायोशियस प्लांट. इन डायोशियस प्लांट मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट आर सेपरेट. मेल प्लांट ही अलग है, फीमेल प्लांट ही अलग है. यानी कैन यू गेट दिस? मेल प्लांट विल हैव ओनली मेल फ्लावर्स, ओके, एंड फीमेल प्लांट विल हैव ओनली फीमेल फ्लावर्स. बात ही खत्म. यानी ये जैसा बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल अलग अलग रहता है, isn't it?
वो अलग अलग क्यों रहता है, ऐसा हमें लगता था जब पढ़ते थे। तो बॉयज हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल अलग अलग बिल्डिंग रहती है, तो वैसा लगता है डायोशियस प्लांट, isn't it? Male plant and female plant are separate. Male plant contain only the male flowers and female plant contain only the female flowers. किस्सा ही खत्म. Autogamy and gytonogamy not at all possible. Gytonogamy क्या है? What is gytonogamy? That is the transfer of pollen grain from anther onto the stigma of different flower present on same mother plant. ऐसा होता है ना कभी? ये मोनोइशियस कंडीशन में वो होने वाला है. In monoecious plant, we find that the plant contains female flowers. ये female flowers वाला, female flowers and male flowers. और ये मेल फ्लावर भी यहां पर ही होते हैं, isn't it? Particularly these are the male flowers. ये डायग्राम निकाल रहा हूं मैं. Male flowers and female flowers when present on same plant, it is known as monoecious plant. ये monoecious plant है. Male flower और female flower अगर एक ही प्लांट पे है तो, वो हमारे दोस्त का बीडीएस में नंबर लगा था, डेंटल सर्जन बीडीएस जो है, ओके. तो वो मुंबई में उनका जो कॉलेज था वहां पे जो हॉस्टल और कैंटीन एक था बॉयज एंड गर्ल्स का, एंड द हॉस्टल वाज एक्चुअली आई थिंक इन द सेम प्रीमाइसेस, इन द सेम बिल्डिंग आल्सो. वन फ्लोर फॉर बॉयज हॉस्टल, अदर फ्लोर फॉर द गर्ल्स हॉस्टल, isn't it? ऐसा कुछ तो भी था. तो कैंटीन एक था तो क्या होता था, बिल्कुल सभी लड़के और लड़कियां ऐसे सज धज के आते थे कैंटीन में. अगर बॉयज हॉस्टल रहा तो क्या होता है, कैसे भी लड़के कैसे भी आ जाते हैं, isn't it? कि ऑल बॉयज आर देयर. और गर्ल्स हॉस्टल है तो वो भी बताते हैं, वहां पे भी हमारी फ्रेंड बताती थी, कैसे भी किसी भी हालत में वहां पे आ जाते कैंटीन में. तो यहाँ पे एक ही कैंटीन होने की वजह से क्या होता था, दैट दे वेर कमिंग अप टू डेट. तो ये हो गया मोनोइशियस कंडीशन. जब भी मैं मोनोइशियस और डायोशियस कंडीशन लर्न करता हूं तो ये किस्सा मुझे याद आता है, isn't it? Monoecious means both male and female flowers are produced on same plant. ये मोनोइशियस कंडीशन हमें जो दिखती है, दैट मोनोइशियस कंडीशन का एग्जांपल है मेज. दूसरा एग्जांपल है कैस्टर. ओके, ये ध्यान में रखो क्योंकि द क्वेश्चन इज सेट ऑन दैट. मेज एंड कैस्टर आर हैविंग monoecious condition. Means what? That means both male and female flowers are present on same plant. So one thing is there, in maize and that particular castor, what will happen there? Autogamy will not be possible, but gytonogamy will be possible. Gytonogamy कैसी पॉसिबल है देखो, यानी the pollen grain from the male flowers of that plant may fall on the stigma of female flower of the same plant because they are present there only. तो वैसे अफेयर्स बन सकते हैं ना, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल एक ही प्रीमाइसेस में है तो दैट डेली मीटिंग होता है तो कुछ तो भी हो जाता है ना, कुछ कुछ होता है लाइक दैट, isn't it? तो यहाँ पे वो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर जो है दे आर ऑन सेम प्लांट, सो दैट चांसेस ऑफ gytonogamy आर देयर. सो वी कैन से दैट इन मेज एंड castor, okay, that autogamy not possible. Autogamy not possible, यानी विद इन सेम फ्लावर तो हो ही नहीं सकता, बट gytonogamy मे बी पॉसिबल. नेबरिंग फ्लावर पे वो जा सकता है सेम प्लांट पे, एंड दैट्स व्हाई दिस आउटब्रीडिंग डिवाइस इज नॉट वेरी मच परफेक्ट, आई विल से.
टू सम एक्सटेंट इट इज ओके। अब ये डायोसियस कंडीशन क्या है, देखो दिस डायोसी और डायोसियस कंडीशन इज फाउंड इन पपाया। पपाया मम्मी वाट पाते इधंटी पपाया। पपाया जो है वो प्लांट का भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा आता है, दैट मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट आर सेपरेट। सो ऑब्वियसली कंप्लीटली आउटब्रीडिंग इज ओनली रिक्वायर्ड। ये मेल फ्लावर जो तैयार हो रहे मेल प्लांट पे, दे हैव टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द फीमेल फ्लावर ऑफ द फीमेल प्लांट, and then only the female plant will be able to produce the fruits, otherwise not. Inbreeding is not at all possible. Outbreeding is compulsory. In papaya I will say outbreeding is compulsory. Outbreeding is compulsory because that plants are separate. तो कई बार हो जाता है, अभी हमें मालूम नहीं होता है, समझो पपाया का प्लांट हमने लगा दिया है हमारे होम गार्डन में, हमारे घर के बगीचे में पपाया का प्लांट लगा दिया है, एंड अनफॉर्चुनेटली इफ दैट इज मेल प्लांट, तो क्या होने वाला है, अगर वो मेल प्लांट है तो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द फ्रूट्स। वो पपाया की राह देखते बैठता है वो ओनर, वो बोलता है अभी आएगा, नेक्स्ट सीजन में आएगा। 2-3 सीजन हो गए, मुझे पूछ रहे थे एक बार, और सर आप तो साइंस पढ़ाते हो, आपको तो मालूम है ये हमारे पपाया प्लांट हमने लगाया है यहाँ पे, कभी इसको फल आते ही नहीं। फिर मैंने बता दिया कैसे आएंगे भाई, मेल जो है वो कभी हम देखते प्रेग्नेंट हुए चाइल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। ऐसा मैटरनिटी होम में कभी हमने देखा है कि एक पुरुष जो है वो प्रेगनेंसी लेके गया है वहां पे और उसकी डिलीवरी हुई है, नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही नहीं है वैसा। ओके, सो मेल प्लांट इज देयर, आपने जो लगाया है वो अनफॉर्चुनेटली मेल प्लांट है, तो इसलिए उसको खाली पोलन ग्रेन्स वो बनाता है, एंड इट इज नॉट हैविंग एनी ओव्यूल, इट इज नॉट हैविंग एनी एम्ब्रियो, इट कैनॉट अंडरगो फ्रूट फॉर्मेशन। हाँ, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में अगर किसी का फीमेल प्लांट है, वो बोले हाँ हमारे बाजू में है ना, उनको बहुत आते हैं फल, मैं बोला फिर उनसे जाके झगड़ा करो, उनको कह दो बिकॉज आई एम हैविंग मेल प्लांट विथ मी, द पोलन ग्रेन्स आर गोइंग देयर टू योर फीमेल फ्लावर्स एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द फ्रूट्स। ध्यान में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, यानी इस बंदे के बंगले में जो मेल प्लांट है वो जो पोलन ग्रेन्स बना रहा है, वो पोलन ग्रेन्स जब ट्रांसफर हो रहे हैं वो नेबर के फीमेल फ्लावर्स पे, पपाया प्लांट के, दैट इज प्रोड्यूसिंग द फ्रूट विथ थैंक्स टू दिस। अगर उसके समझ में ये बात आ गई तो उसको कहना है बिल्कुल आपको 50% फ्रूट्स मुझे देना पड़ेगा, इधर 50% पपाया फ्रूट्स के मेरी वहां पे ओनरशिप होनी चाहिए, आपने देना चाहिए। हाँ, निकालने के लिए मैं एफर्ट्स ले लूंगा, और अगर वो सही तरीके से, कई बार मानते नहीं लोग, है हमारे प्लांट के फ्रूट्स आपको क्यों देंगे, एक आध बार आएंगे तो खिलाएंगे, तो फिर क्या करना है, सिंपल थिंग, आपके बगीचे का जो मेल प्लांट है उसको उखाड़ दे दो। दैट इज नॉट ए गुड आइडिया। पर अगर वो फल नहीं दे रहा है, तो अगर वो बाजू का भी फल नहीं दे रहा है आपको, तो क्या करना है, आपका मेल प्लांट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, द पोलन ग्रेन्स विल नॉट गो देयर, एंड हाउ दैट प्लांट विल प्रोड्यूस फ्रूट्स देन, इजंट इट। तो ये है very important, very simple. Unisexuality condition prevents inbreeding, and unisexuality condition causes the outbreeding, and that's why it is a very successful outbreeding device. समझ में आ रहा है? तो इसमें क्वेश्चन बार बार आता है 2 मार्क के लिए, इवन इन CBSE बोर्ड ऑल्सो।
या एमसीक्यू भी बन सकता है, दोनों भी बताऊंगा आपको। क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में जो आता है वो क्या आता है, दैट outbreeding is possible, or that particularly outbreeding device for maize and castor या unisexuality condition in maize and castor is less efficient than in papaya, explain। क्या क्वेश्चन दिया है देखो, दैट यूनिसेक्सुअलिटी कंडीशन is less effective in maize या कैस्टर बोलेंगे, दो अलग अलग है, मेज या कैस्टर, than in papaya, explain। ओके, तो ये हमको आना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो आंसर क्या लिखेंगे आप, यूनिसेक्सुअलिटी कंडीशन इन मेज और पपाया इज लेस इफिशिएंट और लेस इफेक्टिव देन इन पपाया, एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, यू कैन से दैट इन बोथ मेज एंड पपाया प्लांट unisexual flowers are produced, so male flower and female flowers are different, but in maize plant which is monoecious, the male and female flowers are produced on same plant, same mother plant, so their autogamy is not possible, no doubt, but geitonogamy is definitely possible, isn't it? Geitonogamy यानी pollination with the neighboring flower of the same mother plant, and that's why it is not a perfect outbreeding device, it is not 100% efficient, 50% हो सकता है, यानी ये पोलन ग्रेन अगर बाजू के प्लांट पे जाके गए then that may be possible, so I am not saying that it is completely failed, but 50% possibility ये भी है that geitonogamy is possible, which is not a cross pollination, which is a inbreeding, because plant एक ही है। But in papaya you can say that which is showing dioecious condition, or which is a dioecious plant, male plant with male flowers and female plant with female flowers are already separate, isn't it? So the pollen grains need to transfer from male plant, one plant, onto the flowers of female plant, and that will be a perfect outbreeding, that will be a perfect crossbreeding, cross pollination, and that inbreeding is avoided completely, outbreeding is possible completely, and that's why papaya will show it more effectively। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। तो ये भी क्वेश्चन आपको आएगा, एमसीक्यू में वैसे आ जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग outbreeding is 100% successful, number A maize, number B castor, number C papaya, number D both A and B। तो हमको लगता है both A and B होगा, क्योंकि वो एक साइकोलॉजी है हमारी, वैसा नहीं है। मेज एंड कैस्टर में 100% इफेक्टिव नहीं है, पपाया में है, तो करेक्ट आंसर इज पपाया। ओके, सो आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस very interesting part, very interesting article there. In the next lecture we shall complete the remaining 3 devices. Okay, so do give the like and share to this video, and do subscribe to my Xllth Biology and Xllth Chemistry channels. Thanks a lot.